Hello dear students, welcome you all for this video lecture. Now in this video lecture we have discussed the most important part of your syllabus topic, that is immunity. Before going to start immunity, we have already discussed all type of diseases, the different diseases that will be given in your syllabus. We can complete it. Now it's time to go for the new topic, which is known as immunity. The word immunity you have listened in one time, that the immunity that is nothing but the immuno power of our body. What is immuno power of our body? जोड़ा कि आम सिंपली ओडिया रे कोन बोली कहउछे, जोड़ा कि आम देह रे थिबा रोग प्रतिरोधक शक्ति ना नहीं, एई जो रोग प्रतिरोधक शक्ति बोली जोड़ा कहा जाए सेटा को आम इम्यूनिटी बोली कहउछे. And we have discussed immunity briefly. Generally it is two types. In this video we have discussed what is immunity, what are the types of immunity, and from this type there are two type of immunity. After the two type of immunity, in this video we have discussed only one type of immunity, that is innate immunity or non-specific immunity. In this video we have discussed. Okay, let's start immunity. तो देखो बोले इम्यूनिटी स्टार्ट करिया पूर्व मु गोटे किछि जिंस कहूची कोन कहला, ए जो व्हेन ए स्मॉल बेबी विल बी born, जतोले कि छोटो छुआटा जन्म हुए, some activity they learn from the outside environment, from the other peoples and from their parents and teachers, but some activity they can do from the birth. भल से सुनो कौन कहूँ, छुआटा जो जन्म होची किछिटा काम से लोक मानू देखिकी जानिकी बा हमर किछि पेरेंट्स मानू शिखुची, आउ किछिटा काम से कौन करछि ऑटोमेटिकली से निजे करे. Like no one can teach to small baby for breastfeeding, no one can say for crying, but he or she or the newborn baby can learn how to fight or how to talk or different activity from the other humans or their parents or their surrounding environment. Okay, तो एठी कोन कहला लाइक दिस सही भलिया का हमर इम्यूनिटी टा को मध्ये हमें रिप्रेजेंट करिबा. तो कोन कहला व्हाट इम्यूनिटी, फर्स्ट हमें जानिबा ए जो व्हाट इज इम्यूनिटी हमें देखिबा, और द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी. देयर आर different types of definition, there are different types, like I can told one in your book written is the another one, but in simple thing, simply जदि हमें कहिबा what is immunity, it is the power. डेफिनेशन को जिबा मु जस्ट मु कहि दोछि बुझिबा पय, तापर हमें डेफिनेशन को एग्जैक्ट डेफिनेशन को जिबा. कोन कहले, it is the power of our body which can fight against the disease causing pathogens, or it is the power or it is the system in our body by which our body or the host body जा देह रे होची से host body by which they can fight against the different type of disease causing pathogens. That system is known as the immunosystem, and study of immunosystem is known as the immunology. Immunology, logy means to study. तो कौन कहला देखो, एटा होचे हमर बॉडी रो सही क्षमता जोटा कि रोग प्रतिरोधक शक्ति जोटा हम ओडिया रे कहउचे, सही पावर जोटा कोन करछि विभिन्न प्रकार डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म माननकु बा पैथोजेंस माननकु बा बाहरु हमर आस्थियो फॉरेन पार्टिकल्स माननकु हम देह रे रोग करेबा को दो नाही. सिंपली देखो, in our palm or in our hand there are thousands of bacteria, pathogens, viruses are placed. If we can do wash in normal water, then also some bacteria are present in our hand and we can feed it. I mean, by the hand we can feed it. I mean, feed the food, and food ta khai दुचे. So number of bacteria will go through the food material संगे जाउचे.
हेले मध्य कोन हमको डिजीज होउची कि नाही कोन पय ड्यू टू आवर इम्यूनो सिस्टम कोन से इम्यूनो सिस्टम हमें पढ़िबा डिटेल्स रे नेक्स्ट आउर गुड एग्जांपल सेम देखो तुम एग्जांपल हमर जो एनवायरनमेंट रे नंबर ऑफ वायरस बैक्टीरिया पैथोजेन्स जाक रही अछंती फॉरेन पार्टिकल्स जाक एमाने मध्य हमर थ्रू द स्किन दे की मध्य जाउछंती through the contaminated air or by the process of inhalation रे मध्य हमर जाउछन हम देह भीतर को बा when we can talk to each other if a person will be suffering from one type of disease that is the communicable disease it will be spread from the one person to another person तो एई जाको जो जाउची हम देह को नंबर ऑफ बैक्टीरिया बा वायरस जो माने पसंती बा इंजेक्ट हुअंती एई समय रे हम जदी प्रॉपर सैनिटाइज करने हाथ को बा हम प्रॉपर सफा सुतरा सैनिटाइज न होई जदी अच्छे ताहले हम नंबर ऑफ बैक्टीरिया गले तो एमाने कौन सांगे सांगे डिजीज करते कि ना सांगे सांगे आम देह डिजीज होनी तो से जोटा को आमर ये जो भाइरस मानू जे फाइट कला आम देह किसी ना किसी अच्छी जे कौन कर भाइरस बैक्टेरिया मान फाइट करुच्ची तो से सब विषय आम जाना कौन से सिस्टमटा कौन से अच्छा को प्रकार यहाँ ए सब जगह आम डिटेल्सली जीवा ये जो इम्यूनिटी चैप्टर रे ओके तो ये जो जिनसटा बहुत इजी आरंभ कौच बहुत इजी खाली शुणिकी मन रखिले बास तुम रिप्रेजेंट कर दे पारियो एग्जाम रे एवं एथिरो बिट क्वेश्चंस मध्य तमरो किछि नीट ओरिएंटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आसीबो बा तमरो बोर्ड एग्जाम मानव पय मध्य इथरो किछि 1 to 2 मार्क मध्य आसुछि बा शॉर्ट नोट रे प्राय व्हाट इज इम्यूनिटी और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी तमरो क्वेश्चन प्राय आसे तमरो तो सेति पय बोली भल से सुनिया देखो कोन कहले लेट्स वी स्टार्ट द इम्यूनिटी ओके इम्यूनिटी फर्स्ट वी गोज फॉर द डेफिनेशन डेफिनेशन जीवा कौन कहले देखो भल से बुझो गोटे गोटे लाइन को वर्ड को बुझो कौन कहले इट इज द एबिलिटी और इट इज द पावर और इट हला एबिलिटी माने कौन क्षमता इट इज द एबिलिटी ऑफ होस्ट कार एबिलिटी रे जा देह रे होस्ट मो इठी कहनी गोटे स्पेसिफिक ह्यूमन बा गोटे एनिमल्स मु कथा किछि कहनी जा को हबो होस्ट जा देह रे पैथोजेन्स पसिबे द होस्ट ओके तो कौन कहले इट इज द एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट जो लोक देहरे किसी फॉरेन पार्टिकल्स पसुचंती बा भाइरस बैक्टीरिया जा देहरे पसुचंती से हला होस्ट माने कर मते फीवर हेची बा मते निमोनिया हेची तो आई एम द होस्ट दैट मींस द पैथोजेन्स और द कॉजेटिव एजेंट्स आर प्लेस्ड इन माय बॉडी सो आई एम द होस्ट सिमिति जा देहरे पसु माने कर गुडे एनिमल्स को हेचे लाइक डॉग कैट बा काउ से हला होस्ट बुझ पाछो तो कोन कहला एटा सही होस्ट रो एबिलिटी बा पावर इट इज द एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट सी जो पावर कौन पाई टू फाइट का संगे फाइट करिवो टू फाइट एग्नेस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का संगे जो एटा हला आम देहर बा होस्ट देहर सही पावर बा क्षमता जो क्षमता फल से कौन करुच्ची डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म्स और पैथोजेन्स मानन को फाइट करिया पई सक्षम थाए तो कौन कहला इट इज द एबिलिटी ऑफ होस्ट to fight against the disease causing organisms or pathogens conferred by immune system of the host जोटा कि से पावर जोटा कि हम देहरे जो पावरटा अछि दैट इज द इम्यूनो सिस्टम एई जो इम्यूनो सिस्टमटा हम देहर कोन करछि फाइट करछि सेटा को हमें माने जो क्षमताटा हम देहर अछि ताको हमें इम्यूनो सिस्टम बोली कहते कारण ऑफ द होस्ट देखिथिबो some person will be suffering from if they will be now in winter season if a person will be move in early morning then they will be suffering from the cold fever or in the cold but some people are not suffering simple example आमे जदि आउर गुटे जीवा एग्जांपल को देखि दियो किछ लोक जो माने कि वर्कर्स जाका हमर कोन करंती खरा रे वर्षा रे शीत रे दिन राति से माने कष्ट करंती बा काम करंती सेमानन को बॉडी रो रेजिस्टेंस पावर बा इम्यूनो सिस्टम अधिका से डिजीज होनी कि नॉर्मल आम जो मैंने घरे रोचे टिके ठंडा रे बोल दबा वर्षा रे भिजी गले ताहले हम ठंडा बा खासल ठंडा किछि हे जाउछ डिजीज होछि काहे की तो प्रति इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एनिमल्स टू एनिमल्स ए जो इम्यूनो सिस्टमटा भेरी करछ भेरी का देहरे टिके स्ट्रांग इम्यूनो सिस्टम अछि का देहरे टिके वीक इम्यूनो सिस्टम अछि इट विल बी डिपेंड अपॉन आवर डब्ल्यूबीसी और इट विल बी लाइक टू टाइप्स लाइक हमर जो पढ़िबा टोटल काहे की ए प्रकार डिफरेंस मध्ये आसे ए विषय मध्ये जानिबा हमें तो कोन कहला व्हाट इज द डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन इट इज द पावर और एबिलिटी ऑफ ए होस्ट टू फाइट एग्नेस्ट दी का संगे फाइट करिवो फाइट एग्नेस्ट दी डिजीज कॉजिंग पैथोजेन कन्फाइंड बाय दी
conferred by the immune system of the host. गोटे इम्यूनो सिस्टम रो होस्ट ऊपर बा होस्ट रो जो इम्यूनो सिस्टम ऊपर एटा डिपेंड करूछ. नेक्स्ट आसला नेक्स्ट पॉइंट, द सिस्टम व्हिच प्रोटेक्ट द एनिमल बॉडी. आम देहर से सिस्टम जो सिस्टम टा की एनिमल्स बॉडी को प्रोटेक्ट करूची, the system which protect the animal body against pathogens, that means the disease causing organisms like pathogens, allergies and diseases, and also from the cancer. I'm putting a disease cancer. এইটা হলা সেই পাওয়ার বা সেই ক্ষমতা আম দেহর, that is the immune system, যে কোন করছে আম বডি কো প্রোটেক্ট করছে এগেইনস্ট কার এগেইনস্ট রে, ডিফারেন্ট টাইপ অফ পাথোজেন্স এগেইনস্ট রে, different allergens the organism which can cause allergy to us, amu je allergy karochi, these are the allergens, pathogens and some diseases, and also from the cancer, that means the growth of the abnormality cell or the rapid growth of abnormal cell. तो এই সব জাকরু এগেইনস্ট আমু প্রোটেক্ট করিবারে মধ্যে আমু সাহায্য করুছি. নেক্সট আসলা, the sign which deals with the immunity, जो साइनटा बा जो लक्षणटा जो सिम्पटम जोटा साइनटा हमर जो देह रोज लक्षण, the sign which deals with the immunity and development of immunity against pathogen is known as immunology. जो सिस्टम टा कि आम इम्यूनो सिस्टम ऊपर जानिबा, आम देहरे जोटा कि रोग प्रतिरोधक शक्तिटा बढ़ाई से विषय जानिबा, ए सब विषयटा आम कोन बोली कहउचे, which is called as immunology. सेटा हम कोन बोली कहउचे, the types of immunity. Generally immunity is two types. Definition होला, description होला, एबे हम देखिया त टाइप्स कोन immunity. Generally immunity is two types. Immunity केते प्रकार, दुई प्रकार. कोन, the first one is that generally it will be divided into two types. एडा केते भाग रे हम विभक्त करते पिले दुई प्रकार. कोन कोन, गोटा असला innate immunity, गोटा असला innate. इन माने कोन भितरे, नेट माने असला दिस इज द न्यू बॉर्न. ओके, तो न्यू बॉर्न नाटाल बोल जोटा कोच हम माने छोटो छुआ जोटा कि इन बॉर्न जन्म हैला तो जोटा हम देह रही अछि, तो इटा असला innate immunity. एंड नेक्स्ट वन इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्वायर्ड? एक्वायर्ड माने जोटा हम गेन करिचे, जोटा हमें थ्रू आउट आवर लाइफ, हमर जीवन समय मध्य रे हमकु जोटा कि हमु मिलिछ बा हम बॉडी जोटा कि रेस्पोंस करिछ. लाइक गोटे मो स्मॉल एग्जांपल दो, चिकन पॉक्स. देखो चिकन पॉक्स इज ए वन टाइप ऑफ डिजीज. ए जो डिजीज, इफ ए पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम वन टाइम इन द चिकन पॉक्स, देन दिस डिजीज विल बी नॉट again further goes into their body for their lifespan. Generally in case of 90% chances एटा हुए कोन हुए, जदि गोट लोक चिकन पॉक्स जो सफरिंग हेची ताहाले नेक्स्ट टाइम आउथरे ताको कोन होबो चिकन पॉक्स तार लाइफ स्पैन रे हुए नाही. बट इन सम वेरिएशन किछटा इन द स्पेशल केस अछि जो जाकी सेकंड टाइम मध्ये हुए छाडीबा, सेटा किछटा केस, किंतु नंबर ऑफ मेजर कोन हला जोटा कि हमें गेन करले, दैट इज द एक्वायर्ड. किमिति हला सर ओढिबा हमें एक्वायर्ड कोन, एटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी कोन, एंड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अदरवाइज नोन एज स्पेसिफिक इम्यूनिटी. एटा कोन बोली कहा जाय, स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोली मध्ये कहा जाउछि. सर व्हाट डू मीन बाय स्पेसिफिक? स्पेसिफिक माने गोटे, जस्ट एग्जांपल, गुड एग्जांपल दोछि, आवर नेम इज ए स्पेसिफिक. भाबो हमर गोटे क्लासरूम रे अछि, हमें गोटे 50 टा 60 स्टूडेंट्स अछंती, ए जो स्टूडेंट्स भितर मोटे स्पेसिफिक गोटे नाम धरि डाकिली राम. तो स्पेसिफिकली मु आइडेंटिफाई करली राम को. समटाइम्स आई कैन टोल्ड यू, अरे पिले कुह, पिले माने कोन हला, मु का को मेंशन करली नाही, दैट मींस आई एम नॉट गोज फॉर द स्पेसिफिक, दैट इज द नॉन स्पेसिफिक हे गेला, माने समस्त को पिले माने समस्त हे गेले, किंतु राम बोली कहला गोटे इंडिविजुअल, दैट इज द स्पेसिफिक. तो एटे स्पेसिफिक कहिबार अर्थ हला, व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी, बिकॉज़ some of the antibody that will be produced in our body by the blood, this is the specific for the some bacteria, some viruses, some fungi. तो एटा कोन होती, गोटे स्पेसिफिक बैक्टीरिया पई हम देहर गोटे स्पेसिफिक इम्यूनिटी ग्रोथ करूची, गोटे स्पेसिफिक भाइरस पई माने गोटे पार्टिकुलर स्पेसिस बा गोटे पार्टिकुलर पैथोजेन पई बोली कि जोटा हम देहर ग्रोथ करे, सेटा को हम जेहेतु एटा थोड़े स्पेसिफिकली गोटे ऑर्गेनिज्म रे एगेंस्ट रे आम देहर ग्रोथ करूचे एंटीबॉडीटा, सेटा कोन बोली कहउचे, हमें स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोली कहउचे. तो एटा जदि स्पेसिफिक इम्यूनिटी हला,
आमे इननेट इम्यूनिटी अदरवाइज नोन एज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी एटा को आमे कोन बोली कहि परिबा नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोली कहउचे सर व्हाट डू मीन बाय नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी सेम एग्जांपल माने बु जोटा कहउतली पिले माने समस्त पय सेम जस्ट एग्जांपल स्किन भाबो आम देहर स्किन स्किन रे मध्य नंबर ऑफ वायरस बैक्टीरिया अछनी बट एई जो सब प्रकार वायरस सब प्रकार बैक्टीरिया पय से गोटे दैट इज द फेगोसाइटोसिस the engulfment of the disease causing pathogen the process is known as phagocytosis this is the most process by which the innate immunity or the specific immunity do in our body तो ये कौन करे से जो बैक्टीरिया से बैक्टीरिया हो वायरस हो फंगस हो एनी टाइप ऑफ पैरासाइट से हो से कौन करছে ताकू गोटे प्रकार से माने समस्त को गोटे प्रकार से ताकू किल करिवार साहाय्य करছে जोटा कि हमें नॉन स्पेसिफिक माने गोटे स्पेसिफिक बैक्टीरिया आसला तो ताकू गोटे पर्टिकुलर दिया हबो ना समस्त भाइरस बैक्टीरिया समस्त बोले गोटे पर्टिकुलर आम देहर इम्यूनो पावरटा अच्छे से कौन बोली कहते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोली कहते नेक्स्ट तुम जान लो तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी केते प्रकार पिले दुई प्रकार कौन कौन इननेट इम्यूनिटी और इननेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और एटा को अदरवाइज नोन एज इनबॉर्न इम्यूनिटी बोली मध्य कहि परिबो और एटा को तुम कह इनबॉर्न दैट मीन्स आमे जन्म हैला आम देहर अच्छी लाइक किछिटा जिंस मु जो तुम प्रीवियसली मधे गोटे एग्जांपल देली ब्रेस्ट फीडिंग टू द चाइल्ड से कि ताको सिखौछि कि नाइ से तार ऑटोमेटिकली कला तो एटा होचे इनबॉर्न इम्यूनिटी मधे आमे आको कहि परिबा नेक्स्ट आसला हमर कोन द सेकंड वन इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी दैट मींस वी कैन गेन और रिसीव फ्रॉम आवर लाइफ स्पैन फ्रॉम प्रॉपर आवर लाइफ स्पैन भितर जोटा हमें गेन करते सेटा को हमें कौन बोले कहते एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोली हमें कहते ओके और स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोली कहले तो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी अगेन हमें पूरा ब्रीफली डिस्कशन करबा एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऊपर नेक्स्ट वीडियो रे मु कहिबी तुमको बट एट जस्ट मु टिके खाली इंट्रोड्यूस माने मु तो डेफिनेशन ऑलरेडी कहि देली कोन एटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी ए जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमर कोन विभक्त होइछि दुई प्रकार रे एटा गोटा एक्टिव इम्यूनिटी out as passive immunity okay so again the specific immunity is again divided into two types that is the specific immunity and active immunity तो ये जो एक्टिव बा एक्वायर्ड इम्यूनिटी पुणी दिभार व्यक्त होइছে एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी पुणी एटा मध्ये दुईटा अछि तो ए विषय ब्रीफली हम नेक्स्ट वीडियो रे डिस्कशन करिवा नाउ हम आसीबा फर्स्ट व्हाट इज इनबॉर्न इम्यूनिटी और व्हाट इज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और जोटा जनरली तार नाम हला इननेट इम्यूनिटी इन माने भीतर मु कहली इननेट माने कार तो जो छुआटा हम जन्म होइछि द न्यू बॉर्न जोटा कि हम देहर ऑलरेडी जन्म हला था हम देहर जोटा रही अछि सेटा को हम कोन बोली कहते इननेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और इनबॉर्न इम्यूनिटी बोली कहते तो सर कोन एटा इनबॉर्न इम्यूनिटी बा नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कोन एटार मु डेफिनेशन तो मु कहि दउछि त मन रखि दियो इट इज द टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रेजेंट इन आवर बॉडी टिल बर्थ सिंपल डेफिनेशन ओके तो कोन कहला देखो इननेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी रो व्हाट इज द डेफिनेशन इट इज द टाइप ऑफ इम्यूनिटी एटा सेही पावर इट इज द माने कोन जे एटा होछि सेही क्षमता और इट इज द एबिलिटी ऑफ द होस्ट that will be present in their body till birth जन्म हैला ठू जो पावरटा ता देहरे माने से होस्ट देहर रही अछि ताको हमें इननेट इम्यूनिटी बोली कहा जाय इननेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और इनबॉर्न इम्यूनिटी बोली हमें कहू जनरली द इनबॉर्न इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स और फोर टाइप्स देली मु ए जो हमर इनबॉर्न इम्यूनिटी ता हमर कोन ए चारि प्रकार माने कोन सेटा हम देहर अछि कोन कोन प्रकार से देखिया फर्स्ट आसला हमर कोन फिजिकल बैरियर तो देखो फिजिकल तम वर्ड रो हमें किछरा जिंस जानिबा चेष्टा करिबा तो देखो फिजिकल फिजिकल माने कोन रे हमें जोडा कहू फिजिकल अपीयरेंस देखि के हमें तार आइडेंटिफिकेशन करते फिजिकल माने ताको जोडा बाहर हमें देखि तो हमर बाहर जनरली कोन अछि स्किन अछि होना नहीं स्किन अच्छी म्यूकस मेम्ब्रेन अच्छी तो ये जो स्किन रे हम नंबर ऑफ वेरियस बैक्टीरिया मध्य हमर एनवायरनमेंट रो आसु इंजेक्ट होची बट स्किन पाखरे एमिति गोटे पावर अच्छी जो पावर ता कोन करती जो बैक्टीरिया वायरस मानका हम देहरे इंजेक्ट होबा पई दउ नाही सेही थी ही से आउटसाइडर ता किल कर दोछ तो स्किन ता कोन
फ्रॉम बर्थ अच्छी ना जन्म हला परे आसिला कि इनबॉर्न सो दैट द स्किन तो देख कौन कहला पिले द फिजिकल बैरियर दैट इज द स्किन हला नै जस्ट आसला हमर कोन आसी गुटे एग्जांपल मध्ये हमें नबा दैट इज द इन फिजिकल बैरियर दैट इज द स्किन जो स्किन रहिला नेक्स्ट रहिला हमर म्यूकस मेम्ब्रेन तो मो एठी गुटे एग्जांपल नै जाउची देखो कोन कहला एग्जांपल रे आमे दुईटा एग्जांपल मु तुमको कहूची भलसे मन रख गोटा आसी हमर ट्राकिया आउट ओइसोफेगस सिंपली जदि आमे रखिबा गोटे हला हमर एयर पाइप through the air circulation respiration होची ट्राकिया देगी out oesophagus through the food pipe or it is by the food will be transferred from this food pipe तो देखो कोन आसला एग्जांपल रे मो गोटे लिखिली ट्राकिया देखो ट्राकिया और एयर पाइप तो देखो पहले कौन लिखली मो ट्राकिया और एयर पाइप सर एटा कौन केमिति होची लेट्स थिंक अबाउट एटा होची हमर ट्राकिया पाइपटा एई जो ट्राकिया रे हमर कोन हुए जनरली जतो कि हमें म्यूकस मेम्ब्रेन मो जातो स्किन कथा तुमको कहले स्किन रे कोन कहले हमर जो स्किन अछि ए जो स्किन रे ये हमको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बा वायरस मानु को इंजेक्ट हबा को दो नाही से सेठी ताको एनगल्फ कर दोची तो इटा हला हमर वन टाइप ऑफ फिजिकल बैरियर आरंभ रो रही गेला फिजिकल बैरियर नेक्स्ट असला हमर म्यूकस मेम्ब्रेन तो व्हाट इज म्यूकस मेम्ब्रेन तो देखो ट्राकिया तापर नेक्स्ट लिखि दोची मध्य नेक्स्ट वन इज द ट्राकिया एंड सेकंड वन इज द ओइसोफेगस ओइसोफेगस और फूड पाइप देखो ओइसोफेगस और फूड पाइप रे कोन हुए जनरली लेट थिंक दिस इज द तमे जहा भाबो ट्राकिया भाबो बा फूड पाइप भाबो जहा किछि तो जनरली हम ट्राकिया नोचे बा हमरो ओइसोफेगस ता नोचे एई जो ओइसोफेगस रे एई जो पाइप ता रहिला होलो पाइप ता आचार्य को भीतर इनर लाइन रे कोन अछि पिले म्यूकस मेम्ब्रेन अछि म्यूकस लेयर ता अछि मानो नै एई जो म्यूकस लेयर कोन करछ म्यूकस सिक्रेशन करूछि एई जतोल कि समय रे म्यूकस ता सिक्रेशन करे जतोल कि हमर बाय द फूड रे जदि ओइसोफेगस हिची माने फूड और जदि ट्राकिया हिची माने थ्रू द एयर और बाय द इनहालेशन जतोल कि इनहेल करूछे हमें जदि किछि बैक्टीरिया बा भाइरस हम देह रे एंट्री करूछंती से समय रे एई जो म्यूकस जाक से मानो कोन कर दियंती किल कर दियंती बा से माने ताको कैप्चर कर दियंती एनगल्फ कर दियंती तो इडा हला ना फिजिकल बैरियर माने आउटसाइड एनवायरनमेंट गला फर्स्ट रो से डिज कर देले तो सर ताहले त हमो केबे डिजीज होबा कथा न हो हां किंतु जेतोले कि हमर कोन होची नंबर ऑफ पैथोजेन जेतोले कि अधिका होई जानते हम बॉडी रे जेतोले कि ए जो फिजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर सेलुलर बैरियर म आस्ते सब जागा पई साइटोकाइनेज बैरियर एई सब जाका जेतोले कि सेमानकर माने किल करिया पावर तो अधिका होई जे हम देह रे सेतोले जाय कि हम सफरिंग होचे बट ता आगुर हम कोन होचे हम बॉडी देखे बा हम बॉडी रो जो डिफरेंट टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी अछि एई सब जाका सेमानु किल करिया पय बोली फर्स्ट चेष्टा करंती बट जदि सेमान सक्सेसफुल हे गेले ताहले हम सफर होने किंतु जदि सेमान गोटो अधिका हमर पैथोजेन्स रहि गेले सेमानक जदि रिप्रोडक्शन अधिका हे गेला बा सेमानकर ग्रोथ जदि अधिका हे गेला ताहले सेमाने हमको डिजीज करिया साहाय्य करंती तो जानले पिले व्हाट इज फिजिकल बैरियर तो innate immunity jaga asla types the first type is the physical barrier that is either skin or your mucous membrane जानि पालो mucous membrane ता कोन करूची साहाय्य कला by the food or air जतोले कि समान वायरस हमरो बैक्टीरिया करिया पय ट्रैप करिया पय बस ट्रैप करके सेठी हमरो किल कर दला नेक्स्ट आसला हमरो physiological barrier sir what do you mean by physiological barrier that means in our body there are different organs are there and the organ system is present like digestive system respiratory system urinary system and when the bacteria and virus goes into our body then the organ system can release some enzymes on some hormones or some liquid substance and they try to kill them এবং সে ট্রাই করুছি সেই যে pathogen মানুষ কিল করিবা পাহি if they will not able to kill that pathogen then we are suffering from or the pathogen will destroy the particular organ or they can cause different disease to the host or the human तो देखो पहले कौन आसला फिजियोलॉजिकल बैरियर तो गोटे एग्जांपल रे हम बुझाई दोची देखिबा हम गोटे डाइजेस्टिव सिस्टम कथा नबा माने भाबो गोटे कंटामिनेटेड फूड ता हम खाई दीचे माने दैट मींस द फूड कंटेन्स सम पैथोजेन जेतो कि व्हेन द फूड विल बी गोस थ्रू द ओएसोफेगस एठी हमर म्यूकस टा किल करिया पय चेष्टा कला
हेले मध्य किसी किल करा परे मध्य सेमान जाय पहुंचने हम स्टोमक रे इफ दे विल बी रीच इनटू द स्टोमक in our stomach we can already know that the stomach can secrete a acid हमर स्टोमक कोन करछ ओटे एसिड सिक्रेशन करछ तार ना कोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो पिला माने किछटा भाबुथे सर जनरली जदि हम एसिड ता जतले गोटे लोक ऊपर पकोते बा गोटे प्रोडक्ट ऊपर पकोते से तो किसी नष्ट हो जाउछ किंतु आम देह एसिड ता सिक्रेशन होछ आम स्टोमक रे बट आम स्टोमक केमिति से नष्ट करूनी पाथोजेन कथा पछ कथा बट तो सिक्रेशन तो होछ ना सेटा तो आम एसिड ता नष्ट कर दा देखो पिले एटा जतले हम फर्स्ट ईयर डाइजेस्टिव सिस्टम पढिथिले सेठी तो मो डिटेल्स रे कोआ हितला बा मो मोर नेक्स्ट वीडियो जतले डाइजेस्टिव सिस्टम पढेबी सेतले तो मते जानि दे परिबो तो देखो मु गोटे जस्ट तुम बुझिया पई क्लेरिफाई मु कर दोची एटा हला हमर स्टोमक ता भाबो ए जो स्टोमक रे हमर कोन अछि HCl secretion हला हाइड्रोक्लोरिक एसिड when the time acid will be secreted they can kill the pathogen से माने एसिड कोन करिवो pathogen नु किल करिवो because ए जिंसरा मन रखो the pH is 1.8 or 1.5 to 1.8 हमर ए जो pH ता HCl रो pH ता हमर पाखा पाखी 1.5 to 1.8 रुहे तो ए जो पार्ट रे हमर कोन जदि स्पेसिफिक तुम पतालो 1.8 बोली कहबो मु जडे फर्स्ट कहल तुमको जदि रेंज बोली कहला हमर 1.5 to 1.8 दैट मींस हाईली एसिडिक तो ए जो एसिड ता हमर जतो स्टोमक रो लेयर को लागिवो it can damage the stomach wall so that before secreting HCl the a layer will be produced which is known as mucous layer हम चारियाडा हमर स्टोमक रो चारियाडा कोन अछि उटे mucous layer गोटे रही अछि ए जो mucous layer ता कोन करछि हमर HCl ता को हमर स्टोमक वॉल टा नष्ट करिया दो नाही तो जानिलो देखो पिले फिजियोलॉजिकल बैरियर कोन आसला एसिड इन स्टोमक तो को एसिड सिक्रेशन ला दैट इज द HCl will be secreted in our body and they can kill the pathogen तो एटा को हमें बोली कहि परिबा मध्य जो सिंपल मु जदी कहि गुड एग्जांपल भलिया एटा को हमें गंगा जल भलिया पडे हमें कंपेयर करि परिबा किमिति कि जिंदी हम कहू जनरली गंगा जलटा पके देले हमर सोजा पवित्र हो जाय बोली कहते सिमिति हमर जेतो कि फूड इन्फेक्टेड हमें कंटामिनेटेड फूड खाइ छै तो से स्टोमक आछि मैक्सिममली टाइम हमर HCl ता से जो पैथोजेन मानो किल करिया चेष्टा करियो हेले मध्य जदी चेष्टा रे माने से फेल हे गेला फेल हेले माने कोन नंबर ऑफ पैथोजेन जदी अधिका ही जानती कंटामिनेटेड अधिका ही जाय छै ताहले इट मे कॉजेस डिजीज टू अस तो इटा असला फर्स्ट एसिड इन स्टोमक नेक्स्ट असला सलाइवा माने जोडा कि हमर लाळ जोडा कि हमें व्हेन एट द टाइम ऑफ बाइट माने चुइबिंग जतोल करते से समय रे हमर सलाइवा एंड इन द सलाइवा लाइसोजाइम इज प्रेजेंट एठी कोन अछि हमर गोटे वन एंजाइम अछि लाइसोजाइम ए सब जाक तमे डाइजेस्टिव सिस्टम रे हम पढि दिबा हला in the saliva they contain lysozyme and lysozyme also helpful for killing of approximately 30% of bacteria in the mouth at the time of chewing पाट्रे जतो हम चुबुचे सलाइवा जो सिक्रेशन करती जो लाइसोजाइम जेतो अछि से मध्य बैक्टीरिया को किल कर दोछि ए सब जाक हमर इनबोर्न रही अछि नेक्स्ट असला हमर बाइल जोडा हमर लाळ बोली कहछे नेक्स्ट असला हमर बॉडी टेम्परेचर एठी मु काहे कि पर्टिकुलरली बॉडी टेम्परेचर मेंशन करले if our body temperature will be increases more than the normal temperature our body temperature जोडा जनरली हम 37 डिग्री रहबा कथा ताट जदि हमर बॉडी टेम्परेचर अधिका हला ए जो बॉडी टेम्परेचर अधिका होबा द्वारा मध्य किछटा भाइरस बा बैक्टीरिया से माने हम बॉडी देहरे टॉलरेट न करि पारि कि से माने डिस्ट्रॉय हो जाते तो these are the different type of physiological barrier that will be present from birth or till birth next asla cellular barrier this is the most important that is the cellular barrier एजा मध्ये important types तो एटा मध्ये सबुठ important and maximumly एटा हम देहरे प्राय काम करे तो what is cellular barrier देखो WBC white blood cell white blood corpuscle or leukocyte in the leukocyte भाबो the leukocyte माने भाबो हमर हला मेन एटा मु का संगे कंपेयर करते आर्मी हमर जेमिति आर्मी अछन ना फॉर डिफेंस आम देश जदि किसी गोटे माने शत्रु आक्रमण कले को माने फाइट करते आर्मी माने तो आर्मी रो डिफरेंट टाइप अछि जिंदि कि जलसेना वायुसेना स्थलसेना तापर पारा स्टाफ ए जो समस्त अछन सी टाइप्स रहला माने बुझ पालो तो डब्ल्यूबीसी ता हम देहर आर्मी जे कि कोन करछि पैथोजेन्स मानु बा फॉरेन पार्टिकल्स मानु फाइट करूछि तार जो सैनिक जा खेले डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल तो एतिक भितर जो मेन आसला गोटा आसला मु देखो लिखि छी पीएमएनएल भल से सुनो व्हाट इज पीएमएनएल दैट इज प्रेजेंट इन आवर डब्ल्यूबीसी पीएमएनएल मींस
P for poly, single, M for morpho, N for nuclear, L for lymphocyte. Okay, poly, morpho, nuclear, lymphocyte. What is the full form of PMNL? PMNL? Poly, morpho, nuclear, lymphocytes. That means in the lymphocytes, ये जो आम पढ़ी WBC रे ब्लड रे हला नै सेठी मन पका हमर कोन थिला इन द लिम्फोसाइट्स द न्यूक्लियस इज कंटेन पॉली मींस सिंगल तापर सेठी मैक्सिममली सिंगल माने ए प्रकार थिबो से तापर नेक्स्ट इज डाई माने ए प्रकार 1 2 जदि ट्राई हला आउटे ए प्रकार हमर पांचटा टाइप रो थाउची तो छाड़ो से सब विषय एति दिन जाने दरकार नै तो WBC हला हमर जदि आर्मी एमान जाका हला तार डिफरेंट माने सैनिक देखा जोटा तो ये जगह आसला WBC लाइक PMNL लाइक polymorpho nuclear lymphocytes in the polymorpho nuclear lymphocytes monocytes macrophages neutrophils are present हमें ब्लड रे पढ़ी थिले कंपोजिशन ऑफ WBC रे पढ़ी थिले तो ये जो मोनोसाइट मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स ये सब जा कोन कहंती बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस they can kill or by the processing they will be produced in our body antibody माने भाबो सिंपली जदि गोटे वर्ड रे मु कहि दोची एंटीजेन एंटीबॉडी हम पढ़ीचे इन आवर 11th क्लासेस एंटीजेन माने कोन द फॉरेन पार्टिकल when they will be enter in our body it may causes disease to us but antibody they can fight against them सी एंटीबॉडी ता हम देहर कोन करछ तांग सागर फाइट करूची तो एंटीबॉडी एंटीजेन ऊपर मध्ये हम गुड नेक्स्ट वीडियो रे कहिबा डिस्कशन करिया कोन सिना प्रॉपर्ली डिस्कशन करिया बट एबे सही हिसाब रे मन रखि दिथा कोन कहला देखो इन आवर ह्यूमन बॉडी द WBC इज प्रेजेंट टिल बर्थ এই जो WBC नाम कोन अछन नंबर ऑफ मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स अछंती दे कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस एंड द मेन weapon माने कोन अस्त्र जडा हम कहते दैट इज द फेगोसाइटोसिस दैट मींस दे कैन डायरेक्टली एनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल्स सेही समान जदि बाहरु आसीथबा गोटे अलगा पार्टिकल्स देखिले से आइदर पैथोजेन नै थाओ बा जहा किछि भी थाओ से आइदर गोटे भाइरस थाओ बा बैक्टीरिया थाओ बा जहा किछि फॉरेन पार्टिकल देखिले से माने कोन करिए ताको इन्वेड माने एनगल्फ मध्य कर देबे ए जो प्रोसेस ता को माने करते ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ WBC तो ये जो मेन वेपन ता मु कोन कहली फेगोसाइटोसिस ए माने मध्य आम देह रे एंटीबॉडी मध्य प्रोड्यूस करंती जो जाकी कोन करे हमर डिजीज कॉजिंग और पैथोजेंस मानन को किल करिवारे सहायता करे तो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज सेलुलर बैरियर बाधक दोची काको फॉरेन पार्टिकल्स मानन को जो जाके आम देह भीतर पसिबा को दो नाही तो ए जाका आसला हमर मेनली सेलुलर बैरियर द लास्ट वन इज द साइटोकाइन बैरियर देखो पहले एटा मु स्प्लिट कर दोची साइटो माने कोन स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी तो साइटो मींस सेल एंड काइन मींस इज नथिंग बट दिस इज द माने आमे जोडा कहूचे कोन जे इंप्रूवमेंट और आमे जोडा कोन कहूचे काइनेटिक काइन ता वर्ड आछि काइनेटिक रो दैट मींस द एक्टिव करिया साहाय्य करछ तो काको हमर सेल मानु को एक्टिव करूची जस्ट एग्जांपल एटा मु डायग्रामेटिकल तो मु बुझाई देबी कोन कहला देखो भल से पढी दबा तापर मु बुझाई देबी virus infected cell that means if a cell देखो think about this is a cell okay this is the cell of the human एटा हला हमर ह्यूमन सेल दा ए जो सेल दा हमर कोन अछि इन्फेक्टेड हि जाइछ इट लिखि दोछि मु इन्फेक्टेड सेल आईसी माने कोन इन्फेक्टेड सेल का द्वारा इन्फेक्ट हेछि गोटे भाइरस बा बैक्टीरिया द्वारा किछि पैथोजेंस मानक द्वारा इन्फेक्टेड हि जाइछ देन it can release some protein ये कोन करछ गोटे प्रोटीन गोटे सिक्रेशन करे भल से सुनो देखो कोन कहला in the cytokinase that means cyto means cell kinase means active or the word kind comes from the kinetic that means the active that means it can release a protein that is known as interferon से कोन करछ गोटे प्रोटीन गोटे सिक्रेशन करूछ हम कहली ई जो प्रोटीन दा हला हमर इंटरफेरॉन हला तो ये जो इन्फेक्टेड सेल मुकरा बोल सकते ये जो इन्फेक्टेड सेल ता दैट मींस द सेल इज इन्फेक्टेड फ्रॉम द एनी टाइप ऑफ पैथोजेन इट कैन सीक्रेट ए प्रोटीन सब्सटेंस एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन दैट इज नोन एज इंटरफेरॉन देखो इंटर माने कोन रे पिले इंट्रा डिफरेंस अछि इंटर माने इन बिटवीन द टू गुड एग्जांपल दे दोछि दुईटी स्टूडेंट अछंदी
दी जन स्टूडेंट दुईटा बैग दैट मीन्स ए बैग इज माने स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी स्टूडेंट ए रो बैग स्टूडेंट बी रो बैग मध्य जोड़ा गैप अच्छी सेटा कहते हैं इंटर दुईटा मध्य इंट्रा माने कौन बैग भितर माने सेल भितर जोटा आम सेल को आस सेल भितर इंट्रा बट ये कौन कहली इंटर फेरन मीन्स कौन फ्रेंडली नेचर तो ये आसला द वाटर मुझे स्प्लिट कर दी प्रोटीन नाटा मन रख भलसे यहाँ 1 मार्क क्वेश्चन रे आसे तो जनरली कौन होती व्हेन द इन्फेक्टेड सेल if a cell will be infected by the virus or bacteria it can secrete a protein that protein is known as for the other cells जो जाकि unaffected cells to resist against that particular or they can power or they have to power or resist against the pathogens माननको जिंदगी इन्फेक्टेड आउ अदर सेल को इन्फेक्टेड करबा को दब नाही सेति पय बोली से कोन करते इंटरफेरेंस सिक्रेशन करते एई जो इंटरफेरनटा कोन करते हमर एई जो हमर सेल रहला नॉर्मल सेल को ये जो बैक्टीरिया बा वायरस ता हमर इन्फेक्टेड करबा को दो नाही सेति पय बोली कि एटा जो प्रोटीन दा सिक्रेशन करते दैट इज नोन एज इंटरफेरन तो देखा आसला नेक्स्ट साइटोकाइन बैरियर द वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीज ए प्रोटीन टू प्रोटेक्ट सी रिलीज करछ प्रोटीन कोन पय टू प्रोटेक्ट द अदर सेल टू नॉट इन्फेक्टेड टू अदर सेल मानन को इन्फेक्टेड करबा को दो नाही सेही जो प्रोटीन रो नाटा हला इंटरफेरन इंटर माने कोन भितरे सेल भितरे सिक्रेशन होची बा सेल रू सिक्रेशन होची सेल मझरे जो सिक्रेशन होची जोडा के अदर सेल इंटरफेरन फेरन माने फ्रेंडली जोडा इंटरफेरन प्रोटीन रो नाटा मन रखो the infected cell can secrete a interferon protein which will be helpful for to not infected or not infected the other cell मान को infected करबा को दो नहीं so these are the different type of mechanism which will be present in our body till जन्म हेला तो यही प्रकार मेकानिज्म ता सब जगह हम देह रे रही अछि सेति पय बोली कि एई जो प्रकार इम्यूनिटी ता को हम कोन बोली कहउचे इननेट इम्यूनिटी और इनबॉर्न इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक काहे कि नॉन स्पेसिफिक गोटे पार्टिकुलर नै सब वायरस सब बैक्टीरिया फंगस समस्त पय से गोटे प्रकार का पावर से किल करिवो तो सेति पय बोली कि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोली कहउचे दिस इज ऑल अबाउट योर इननेट इम्यूनिटी. In our next video, we have goes for the acquired immunity that will be gain our body till our lifespan, or which is otherwise known as specific immunity. Again, it will be divided into two parts, that is active immunity and passive immunity. We have discussed in our next classes. Okay, thank you.